काउंटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ सेल काउंटर, फॉर हाफ सेकंड में रिपोर्ट आ जाता है। पीपल विल टेक फोटोग्राफ ऑफ द रेटिना एंड एआई विल टेल यू आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है। एआई की वजह से ट्रीटमेंट में तो कोई नहीं जा रहा, ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है डायग्नोसिस में। अरे तुमको हार्ट अटैक आया घर पे बैठे बैठे, योर एआई इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू देयर। पहले का दिन अच्छा था, पीछे अंधा आता था, जो भी दिख गया खुश होके जाता था। What is exciting in the world of ophthalmology today? See, what we are doing right now is we are counting the chicken before the eggs have hatched. Right. We are. Because when you are thinking कि मैं I'll become that is why I asked a you. big cardiac surgeon हाँ. with nothing. हाँ. Okay, the number of years that you're putting into your training, by the time you're actually a good cardiac surgeon, you will be touching 40. बराबर. तो अभी आप जब 40 पे ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 60 साल लगेंगे बनाने को, तो यू हैव टू लिव टिल 100 एंड सी द डे ऑल्सो। Right. Versus somebody who started working at 25 is 15 years ahead of you in terms of monetary work. Okay, because money multiplies. Right. तो अगर आप रेजिडेंसी में ही थे तो आपका एक पे स्टैटिक था, आपका वर्किंग आवर्स तो नॉन एग्जिस्टिंग था, यू कुड रियली नॉट यूज योर हेड टू डू अदर, to invest or to know more, and of course your risk taking appetite is also lesser. Right, so these are a lot of Limitations. not, I won't say limitation, like you have to be clear in your goals. अभी जब मैं MBBS में था और when I was doing my residency, I had really I was not aiming for a gold medal. My aims were two. One, not to have a repeat. Okay, I had taken up DNB. When I had taken up DNB, people told me यार 3 साल पास नहीं होते। तो मेरा तो एम फ्रॉम फर्स्ट डे कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, मेरा थियोरी भी और मेरा प्रैक्टिकल भी। ओके, तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ DNB दैट आई जॉइंड, आई स्टार्टेड स्टडिंग। Even on my emergency day, on my call day, my textbook always used to be मेरे फ़ोन पे मेरी, see we are in a good stage where Dr. Babiskar will tell me करे तेरे फ़ोन पे सब PDF मिलता है, मेरे को तो बुक लेने लाइब्रेरी जाना पड़ता था। जितने बुक्स थे सारे के सारे PDF मेरे पास थे। इन बिटवीन केसेस OT के बीच में, अच्छा एक केस गया दूसरा आया, उसके बीच में हम खोल के 2 पेज पढ़ लेते थे। Because these are things which what I've read today I'll not have to read tomorrow, or tomorrow when I read it again it will be a revision, not a first reading. Okay, lot of things made. So eventually over 3 years my reading was deep enough that I could pass my theory and practical in first attempt. So मेरा गोल तभी वो था। तभी अगर मैं गोल करता कि नहीं मेरे को 100 CR पहुंचना है, then I would have had to dedicate time from reading my medical stuff to actually reading about investing. कि भाई कौन से बैंक में कितना FD है, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है, गोल्ड का क्या रेट होगा। दोज फॉर ऑल दोज ईयर्स आई हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट इट ऑल्सो। ओके, बिकॉज आई वॉज वेरी पैसिव विथ माई मनी। पैसा आता था, बैंक में रहता था, एंड probably I used to make an FD out of it or whatever. And of course at a time then came when my this very intensive education phase was over, and I had more time available. Then I started doing into the other aspect of things. So now I can tell you, okay, multiplication of money has been much more ever since I've been actively looking at my money. I won't say chasing, looking at my money. At least being aware. तो वैसा है। तो अगर आपको बिल्कुल वो न्यूरोसर्जन बनना है जो एकदम छोटा 1 मिलीमीटर का ग्लायोमा भी ऑपरेट करेगा, वो फिनेस ऑफ सर्जरी आने तक ही आप 40 तक पहुंच जाओगे। एंड देन एट 40 if you're going to start looking at your money, not chase, looking at your money, then you will require the next 60 years to make, because that's how it works, that's the maths. But if you're doing it on your own, yes, on your own. But if you're like, then now you understand the craft, you understand the skill, and then now you try to make a business around it, तो उसका तो कोई ऐसा कुछ एज लिमिट या वैसा नहीं है। wait, see, medicine is a branch where you never retire. Right. You are in government service, तुमको 60 पे रिटायर, मैक्सिमम 62 पे एनरोलमेंट दे देंगे, तुम रिटायर हो गए, फिर तुम बैठ के पेंशन खाओगे। Okay, lot of people are like are in professions where actually retirement is, people are scared of retirement कि इसके बाद मैं करूँगा कि मेरे को काम भी नहीं मिलेगा। Doctors are never going to be afraid of that day. जितना मेरा टकला होगा उतना मेरा कंसल्टेशन फीस बढ़ेगा। So
now the point is, am I going to be healthy enough? Right. So when I am 70 years old, when I am 80 years old, am I physically fit to do the things that I'm doing at 35? If yes, then it's open sky. I may even become one of the leading. I mean, see, you will not reach an industrialist level of wealth. One, because our scale is not that much. As I'm limited to seeing maximum, how many patients can I see in a day? मैं जितना भी अच्छा डॉक्टर मैं 50 ही देख सकता हूँ, तो वो मेरा लिमिटेशन आ जाता है. उसमें मैं अभी 50 से कैसे निकालूं पैसे? So you look at your money and you be aware of what other investment options and all those things are available. That's where your money will grow. The benefit of medicine is that this is a perennial rain. यहाँ पे मानसून सीजन नहीं है कि मानसून में बारिश होती है. ये बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश है. अब वो तुम पानी बचाओगे तो बचेगा, बहने दोगे तो दरिया में जाएगा. ऐसी बात है. एंड तो चलो ये तो लाइक मटेरियल बेनिफिट्स की बात हो गई. नाउ कमिंग टू द फील्ड इटसेल्फ, अभी तो एआई आ गया है, एडवांसमेंट आ गया है. You are an ophthalmologist, yes, but I believe you have a very good sense of technology, how it works, what it can do. क्या लगता है AI डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है या एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा? So telemedicine will replace initial consultations. So now your doctor, so let's say fields like pathology, radiology. So like let's take example of pathology, okay? 30 years back जाते हैं, 40 years back जाते हैं, your pathologist was required to see the slide to manually count the number of WBCs, CBCs and platelets. बराबर. Now we have a cell counter. For half second में report आ जाता है. Has it replaced the pathologist? Not yet. Not yet. It will. Pathologist ने भी cell counter ले लिया. Pathologist का काम अब improve हो गया. He is not looking at the routine CBC. He is doing more of histopathology, looking at more of cancers. Now he is looking at. So tomorrow, even if AI replaces certain aspects of medicine, your doctor's role will elevate. So for example, now there is something in Ophthal coming up where people will take photograph of the retina. And AI will tell you आपको diabetic retinopathy है कि नहीं, hypertensive retinopathy है कि नहीं. Okay, right now I do that in my OPD. People come to me in the OPD, I look at his fundus and I tell him कि भाई तेरे को diabetic retinopathy है कि नहीं. Even if AI does that for everyone, तुम घर पे बैठ के भी अपना diagnosis निकाल लोगे, treatment के तो मेरे पास ही आओगे. 1. 2, majority of people that I pick up actually, now so this is where the happiness comes. I was in second year of my residency. We were in a peripheral OPD. वो sort of health center था. वहाँ पे एक gynecologist, एक physician, एक ophthalmologist, ऐसे just OPD based, not a big hospital. I had a patient who was a truck driver who came कि आँख में खुजली हो रहा है. सिर्फ इतने के लिए आया था, एक M2 में सिर्फ आँख में खुजली हो रहा है. I see his retina and I see there are a lot of blood spots in the retina and like bleeding is there. I said आपको blood pressure बहुत ज़्यादा है. I could see his eye and tell him because he had changed of hypertensive retinopathy. He's never checked his hypertension. I sent him to the physician next door. Physician ने देखा 180 by 120 उसका blood pressure undetected and he just came because आँख में खुजली हो रहा था. ऐसे पेशेंट्स तो आने ही वाले हमेशा. My 70% of our work is diagnosing people. वैसे ऑफ्थेल छोड़ दो, आप अदर फील्ड्स भी ले लेते हो. एग्जैक्टली, ऑफ्थेल छोड़ दो. देखो ऑफ्थेल तो मुझे लगता है कभी आउट ऑफ जॉब अदर कभी नहीं जाएगा. अरे तुमको हार्ट अटैक आया घर पे, मेजॉरिटी हार्ट अटैक्स कम घर पे बैठे बैठे. योर AI इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू देयर. नो बट लाइक से सम फील्ड्स लाइक रेडियोलॉजी ले लो. मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ओके. क्योंकि लाइक अर्लियर व्हेन वी हैड टाइपराइटर्स देयर वर टाइपराइटर पीपल. करेक्ट. उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. टाइपिस्ट्स. वो तो नहीं है अभी नहीं गया जॉब. तो देयर ओके, दिस जस्ट वन एग्जांपल. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक है, हॉर्स कैरेज चलाने वाले गए. तो लाइक दैट AI की वजह से ट्रीटमेंट में तो कोई नहीं जा रहा. ठीक है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है. डायग्नोसिस में So as I said, your
CBCs जो पहले पैथोलॉजिस्ट को बैठ के स्लाइड देखना पड़ता था वो नहीं देखता. नाउ दे आर ऑल गोइंग इनटू कैंसर. Okay, so your actual cancer management is improving because these people are not wasting time looking at a WBC slide, but utilizing their energy into diagnosing cancers. So even if AI comes in and radiology में एक एक्सरे अगर AI पिकअप करके बोल भी देता है कि फ्रैक्चर है, तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एक्चुअली और हायर काम पे चला जाएगा ना. ह्यूमन ब्रेन इज स्मार्टर एंड वी आर लाइक रियली हाई IQ पीपल. AI क्या रिप्लेस करेगा? खैर ह्यूमन जजमेंट को तो जजमेंट की बात नहीं, आप यू विल एलिवेट योर सेल्फ naturally, even if you don't want to. Right now, You if have to. you'll have to, because right now if somebody, let's say tomorrow, let's say all basic x-rays are being reported by AI, for example, what will be the role of a radiologist then? To look at CT scans, MRIs, or some newer imaging that they will come up with. Okay, so automatically apna to what is it called, these engineers, they use that term, upskilling, which they have to do if they want to move on, but अपने को तो करना पड़ता है because there's something called continued medical education, which had been happening before this idea of upskilling had come. Right, because you had to attend a CME to know what is the latest treatment, to know what is the latest guideline, what is our education does not end when we finish our MBBS. It is a lifelong process. ये जिसको upskilling बोल रहे हैं अभी, वो तो हम पहले से कर रहे हैं without calling it upskilling. और स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में अपस्किलिंग की हमको आदत है, वो डाली गई है. हम डरते नहीं है पढ़ाई से. we are students for life. So even if AI, let's say tomorrow comes and say all X-rays will be reported by AI, your radiologist will upskill into doing your things. Right. One, because hospital will now say I need a radiologist who is doing so things. So automatically people will get into those things. So in this aspect, there's a market and we are the entity, तो आप तो, and we are very driven people. तो we can say that. Yeah, I mean, then of course then there comes a time when you run dry, as in you burn yourself down. That is something which is more worrisome in medicine, is about people burning themselves out. So if a surgeon at 40 is able to maintain himself till he reaches 100 and keeps on operating, he will achieve all his dreams in life. But वो burn out हो जाएगा तब तक के. तो अगर focus must then be on having a good holistic approach to yourself. Patient को तो हम दे ही रहे हैं, but to yourself also. True, makes sense. And ये सब तो इसके बारे में हो गया. अभी let's come last segment अपन थोड़ा ना ophthalmology related करते हैं. ठीक है. What is exciting in the world of ophthalmology today? Everything. This is one of the last branches जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया. Okay, because initially it was see, there was a ego component also. Heart is so big, brain is so big, हड्डी इतना बड़ा, आ कितु सी. Okay, so थोड़ा सा ऐसे साइड में गया था. Now people are taking it up. Now you see, a 22 millimeter eye is a wonder of the nature. So there is, as you know, embryological, there's ectoderm, mesoderm, endoderm, neuroectoderm. All embryonal layers have contributed something or the other in the eye. Right. You have a component of ophthalmology, which is, let's say, the front part of the eye, जिसमें cornea और lens वाला part आता है, जो एक purely physics oriented branch है, optics oriented. Okay, चश्मे का नंबर देना, contact lens लगाना, LASIK करना, cataract surgery करना. So here there's very little medicine. There's of course the surgery part of it, but a lot of it based on imaging and AI based imaging, then doing a vector analysis, ray diagrams, contour and all those things, custom LASIK and wavefront medicine में कहाँ आता है? Wavefront तो pure physics concept है. That's the same concept which is being probably used by satellites to capture images. Right. Correct. Come to intraocular lenses, you have your extended depth of focus lens, a multifocal lens, a diffractive lens, a
यू नो सो मेनी चीज़ें. अभी चश्मे पे ही आ जाओ तो चश्मे में प्रोग्रेसिव लेंस आ गया, बाइफोकल लेंस आ गया. सो दीज आर द फर्स्ट हाफ ऑफ द आई इज सर्जरी पार्ट. अगर आप छोड़ दो तो प्रैक्टिकली फिजिक्स. ओके. And then you come to the second half, which is your retina. There is a behind second part, which is practically medicine. उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट है, रेटिना सर्जरी होता है, बट 80% 90% ऑफ द वर्क आई से इज मेडिकल वर्क. आई ट्रीट पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो क्या उसको डायबिटीज़ नहीं है? मैं चलो आँख पे देख रहा हूँ, बट जनरल बॉडी डायबिटीज, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. सो मेनी टाइम्स आई लुक एट द पेशेंट एंड टेल देम यू आर हेडेड फॉर अ किडनी फेलियर. Based on what I can पता चलता है. See, the beauty of the eye is that this is the only organ where I don't need to do a biopsy. आप बायोप्सी क्यों करते हो? अंदर देखने के लिए वो क्या टिश्यू है, देखने के लिए. लेकिन इसमें तो दिखता है. वो दिखता है. मेरे को क्यों बायोप्सी करना है? मैं जब पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई तेरे को शुगर 350 है, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ पेशेंट को देख के, बिना ब्लड टेस्ट किए. जस्ट लुकिंग एट योर फंडस आई कैन, योर शुगर राइट नाउ इज 350 और हैज बीन 350 in the last 3 months. Without, and now you go do a blood test and give me your reports, I can predict to you because I can see. Same thing for a nephrologist, he'll have to poke in a needle, take a kidney biopsy. So the beauty of ophthalm of course is that it is a very imaging based and it is a very visual field. आप जो देखते हो आप कभी भूलते नहीं हो. आप किसी भी MBA कोर्स में जाओगे तो they'll tell you, they always emphasize making a very good presentation. भले अंदर स्लाइड कचरा होगा, बट वो जो इनिशियल प्रेजेंटेशन में तेरा, आई मीन जो the client must be very impressed by your presentation so that you are able to sell crap to him. Correct? So ophthalm is a very visual branch. We see everything. Okay, my textbooks are 70% photographs of the eye. और एक बार मैंने फोटोग्राफ देख लिया, मेरे को फोटोग्राफ दिमाग में बैठ गया, थियरी तो बाद में आ ही जाती. ओके. इमेजिंग इज़ वेरी फास्ट डेवलपिंग बिकॉज जितना आपका AI मॉडल बढ़ेगा, आई में डेफिनेटली आएगा. रिफ्रैक्टिव सूट्स तो बढ़ रहे हैं. इंट्राओक्युलर लेंसेज राइट नाउ वी आर एबल टू गिव अ 60-year-old a vision that a 20-year-old has, where his glass is free. Go back 30 years, go back 50 years in time, people used to come with bilateral mature cataracts, अंधे दोला हाथ पकड़ के आते थे. अब पेशेंट आता है, हम लिटरली उसको बिना चश्मे के फ़ोन दिख रहा है, बिना चश्मे के लैपटॉप दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, चांद दिख रहा है. ओके. चंद्रयान बस बचा है दिखना, वो भी एक दिन दिख जाएगा. And people, the more we are offering, the more unhappy they are. Somehow I don't know why now. Okay, I mean, we people, my seniors tell me पहले का दिन अच्छा था, पेशेंट अंधा आता था, जो भी दिख गया खुश होके जाता था. Now patient is seeing everything and still being unhappy about it. You know, LASIK patients are the most unhappy. Okay, so that's a different thing. So very exciting. I mean, very very exciting. Ophthalm as a branch has just started. Oh. And you know, as I said, that golden age of medicine for discovery was over 100 years back, where you could do something in your kitchen. I think ophthalm we are at right that at the beginning. Amazing, yeah, amazing. So yeah, I guess we'll call it a session. Yeah. This was fun talking to you. Fun, really fun. This was Dr. Jayesh Veera. And for all those who want to know, you practice in? No, so I'm at Ghatkopar. Currently at Ghatkopar, will soon open his own clinic / hospital in? Not yet sure. That he will. You can find him on social media. If anybody wants to consult, please go right ahead. He's one of the best brains in the country. Okay? From one of the best institutes. So we had a lot of fun. Surely.